बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहरिया कॉलेज कारसाज के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 में आने वाले फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर को। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ इसके 40 MCQs सॉल्व करेंगे बल्कि ट्रांसलेशन भी सॉल्व करेंगे। और अगरचे सेक्शन बी जो है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे अलावा सब सेक्शन 4 के, लेकिन उसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है तमाम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये कि मैंने जितने भी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर्स कॉलेजेस के और कोचिंग्स के सॉल्व किए हैं उन सबके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उनकी डिस्क्रिप्शन या उनका लिंक जो है वो वक्तन फवक्तन आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आता रहेगा उसे भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपने MCQs। Albert humbly begged the Count of Monte Cristo's help, apology, pardon, support. When Lucy left her home, the minister clock has just struck 4, 2, 5, 3. ये जुमला ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन बहरहाल हमें सही आंसर देखना खाली। The Birkenhead was drowned near Argentina, Canberra, Yerevan, and Cape Town. Malaria was wiped out from Indonesia, Uttar Pradesh, Turkey, India. Complete the statement. Charlotte, your sex is most beautiful, extraordinary, wonderful and interesting. तो आपने करना यह है कि आपने अपनी वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर्स लिख लेने हैं और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक करना है। Here are the correct answers. Albert humbly begged the Count of Monte Cristo's pardon. When Lucy left her home, the minster clock has just struck 2. Birkenhead drowned near Cape Town. Malaria was wiped out from Uttar Pradesh. यहाँ पे इस बात को वाज़ेह करना जरूरी था कि मलेरिया किसने वाइप आउट किया। बहरहाल कंप्लीट द स्टेटमेंट। Charlotte, your sex is most extraordinary. ये बात प्रोफेसर क्यूरी ने मिसेस मेल्डन से कही थी। होपफुली के तमाम तर जो है MCQs आप मार्क कर चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे। चलते हैं फर्दर MCQs की तरफ। Veto power means the right to take down, bring down, turn down, put down. They are not very difficult to invent. They cost nothing. Uttered by, इसको लिखना चाहिए था, this was uttered by Baroness Conrad Amelie Baron. Abu saw an angel in his room writing in the book of peace, divine, gold, God. Pinkerton detective was called by manager to the narrator, supporter, her, Montgomery. Birkenhead means today to stand and face death, to stand and watch situation, to stand and be silent, to stand and be still. The most significant name as the inventor of radio is Marconi, Copernicus, Galileo और Oliver Lodge. उसके बाद है complete the line. These were thy charms. These thy charms are flee, fled, away, escaped. Whippy is a woolly cat, lapdog, palm top, beast. The scientific attitude of mind insists on hesitation, endurance, reasoning, dissolution. FAO was established in 1943, 1942, 1945, 1941. तो इसको पॉज कर लें वीडियो को और अपने आंसर्स को पहले लिख लीजिए और उसके बाद फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। Here are the correct answers. Veto power means the right to turn down any discussion, any decision. They are not difficult to invent. They cost nothing. This was uttered by Baroness. Abu saw an angel in his room writing in the book of gold. Pinkerton's detective was called by the manager to the narrator. Birkenhead means today to stand and be still. The most significant name as the inventor of radio was Marconi. In the play Progress, Gage is Gardner. Complete the line. These were thy charms, but all these charms are fled. Whippy is a woolly lapdog. The scientific attitude of mind insists on reasoning objectively. FAO was established in 1943. अच्छा, एक किसी और वीडियो में मैंने इसको सॉल्व किया था तो एक बच्ची ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि सर ये 1945 होना चाहिए। तो बुक में भी 1943 लिखा है। इसकी ओरिजिनेशन जो थी वो
1943 में हो गई थी। होपफुली के सारे एमसीक्यूज आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा देखिए, ये जो 7th एमसीक्यू है ये थोड़ा सा एब्सर्ड है इन अ सेंस के ऑक्टेव इज कॉल्ड टू दी व्हाट, सेकेंड 8 लाइन्स, फर्स्ट 8 लाइन्स, लास्ट 6 लाइन्स, लास्ट 8 लाइन्स। या तो फिर रेफरेंस देना चाहिए था कि बात कर रहे हैं सोनेट की, लेकिन इन्होंने कुछ इसी तरह से दे दिया। बहरहाल इसको इसी तरह से डील करते हैं जिस तरह से ये हमें दिख रहा है। ऑक्टेव इज कॉल्ड टू दी फर्स्ट 8 लाइन्स। सोनेट के अंदर जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं, वरना ऑक्टेव जो है फर्स्ट 8 लाइंस भी हो सकती हैं। किसी पोएम में हो सकता है कि वो लास्ट की 8 लाइंस हो जाएं। द वर्ल्ड वॉर II ended in summer, winter, spring, autumn. Au revoir means good morning, good evening, good afternoon, goodbye. After his death, an unpatriotic man will remain honored, unhonored, regarded, unrewarded. Science and Scientists is written by W.C. Fields as St. John G. Avon, F. Sherwood Taylor, Lord Byron. Curry's maiden name was Emily, Caroline, Suzanne, and Hannah. तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। The World War II ended in the spring of 1945. Au revoir means goodbye. After his death, an unpatriotic man will remain unhonored. Science and Scientists is written by F. Sherwood Taylor. Curry's maiden name was Hannah. होपफुली के सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर चुके होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोनों प्ले के एमसीक्यूज अलोंग विद द पास्ट पेपर्स आप देख सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें या सिर्फ सुन सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन आ रहा है आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं उन तमाम तर वीडियोस को। The Count of Morcerf arrived punctually in the chamber at 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. Charlton murdered John Pierpont Morgan, John Christopher Wells, John Edward Robson, John Walker Bush. The French stormed Moscow, Regensburg, London, New York. A sonnet is composed of 17 lines, 14 lines, 16 lines, 15 lines. The dialect spoken by the people of Scotland was Gaelic, Welsh, Erse, Irish. Charlotte considers Henry just a dull, unimaginative, and careless, bloodless, senseless, useless. Albert said at the dawn tomorrow, the point of my sword shall pierce him through heart, brain, chest, neck. According to Shepherd, the amount was paid to sell Jesus was 29, 30, 14, 20. For how many days and nights did Eddie wait in a shallow trench for help? 8, 6, 5, 7. The name of Oliver Goldsmith's village was Orem, Auburn, Augustin. Dragged into the mire means destroyed completely, ruined completely, disgraced, completed, and disrespected publicly. तो पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को मार्क कर लें और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। The Count of Morcerf arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. Charlton murdered John Edward Robson. The French stormed Regensburg, जिसका old name है Ratisbon. आपको याद होगा आपने वो पोएम पढ़ी थी Incident of the French Camp. उसके अंदर था we French stormed Ratisbon, और Ratisbon का जो modern name है वो Regensburg है। A sonnet is composed of 14 lines. First stanza octave and second stanza sestate. अगर वो Italian pattern पे है तो। The dialect spoken by the people of Scotland was Gaelic. Charlotte considers Henry just a dull, unimaginative, and bloodless fool. Albert said at the dawn tomorrow, the point of my sword shall pierce him through heart. According to Shepherd, the amount was paid to sell Jesus was 30 pence, 30 coins.
For how many days and nights did Eddie wait in a shallow trench for help? 8 days. The name of Oliver Goldsmith's village was Auburn. Dragged down into the mire. Yeah, dragged into the mire, sorry. इसका मतलब जो बेस्ट आंसर है यहाँ पे वो है disrespected publicly. Hopefully के MCQs आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. चलते हैं further MCQs की डिस्कशन की तरफ. Mrs. Meldon was informed regarding her son's death by chief officer, chief manager, chief organizer, chief assistant. The word minstrel means player, singer, vocalist, musician. Coventry Patmore struck his son, dismissed him with hard words, and unengaged, unemployed, ungrateful, unkissed. Qaid-e-Azam came in Karachi on 7th August, 8th August, 4th August, 3rd August. Pugnacious means eager to learn, fight, study, adapt. Anglo-Saxon is the correlation of two parties, tribes, friends, states. When Eddie had his second leave, he was a major, lieutenant, sergeant, captain. तो पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स लिख लें और उसको लिखने के बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें. Mrs. Meldon was informed regarding her son's death by. इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ना चीफ ऑफिसर है, ना चीफ ऑर्गेनाइजर है, ना चीफ मैनेजर है, ना चीफ असिस्टेंट है, कमांडिंग ऑफिसर है. अब कमांडिंग ऑफिसर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चीफ ऑफिसर भी गलत है. कमांडिंग ऑफिसर इज द राइट आंसर. ठीक है ना. मिसेस मेल्डन को उनके बेटे की मौत, एक्चुअल डेथ के बारे में तो एक लड़के ने बताया था, लेकिन जो उसकी डेथ की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी जो उसे आर्मी की तरफ से दी गई थी, वो कमांडिंग ऑफिसर था जिसने उनको बताया था. तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसमें राइट ऑप्शन गिवन नहीं है. द वर्ड मिन्स्ट्रेल मीन्स सिंगर. अच्छा, एक बात मैं वाजे करता जाऊं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब रिकॉर्ड करने लगता हूँ तो मैं आंसर्स देखता हूँ, पहले से होमवर्क नहीं किया हुआ होता है क्योंकि टाइम बहुत लगता है उसको करने में, तो मैं कहीं कहीं पे गलतियां कर जाता हूँ. ठीक है. और जहां गलती होती है वो मैं करेक्ट भी कर देता हूं. तो जो आपके कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर जो सबसे पहली पिन आपके पास कमेंट होगा उसके अंदर करेक्शन होगी. तो अगर आपको कहीं लगता है कि कोई मिस्टेक है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, मैं उसको पिन कर दूंगा अगर वो वाकईतन गलत हुआ तो. क्योंकि इतने सारे एमसीक्यू जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो समटाइम्स आप कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आप गलती कर रहे हैं कि नहीं. Coventry Patmore struck his son, dismissed him with hard words and unkissed is the right option. Qaid-e-Azam came to Karachi on 7th August. Pugnacious means eager to fight. Anglo-Saxon is the coalition of two tribes. When Eddie had his second leave, he was a captain. Hopefully ये सारे MCQs आपने कर लिए होंगे, और MCQs करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है सुनने का या करने का, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं. अगर आप अच्छी तरह से इसे कर लेते हैं तो आपकी जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे. तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन योर एमसीक्यूज. देखें यहाँ पे हमारे पास सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपके सामने है. हमारे पास है what are the most important differences between the General Assembly and the Security Council? Why did Mr. Manning never believe that the king was the murderer? ये the hostile witness से है. What was the real legend of Cyanogrades? What is the difference between objective thinking and prejudice thinking? ये science and society से है. उसके बाद है briefly describe the beauty of Auburn before it was destroyed. The deserted village से है what are the disqualifications of an unpatriotic man according to Sir Walter Scott. ये है the lay of the last minstrel से what is the main idea of the poem incident of the French camp. Why did Coventry Patmore pray to God that night. Play में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है. Why did Albert decide not to fight a duel with the Count of Monte Cristo. What was the basis of hatred between the Count of Monte Cristo and the Count of Morcerf. Why does Corey call his invention a humanitarian invention. What does Mrs. Meldon mean by calling war an organized butchery of boys? Subsection 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसेक्शन 4 में बल्कि चलते हैं आगे, सिर्फ ये वाला मैच द कॉलम हम सही कर लेते हैं. अंडर द वेदर का मतलब है स्लाइटली अनवेल,
एट स्नेल्स पेस का मतलब है वेरी स्लो, स्लाइट ऑफ आर्ट्स का मतलब है एन आर्टफुल ट्रिक, और उसके बाद है गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है बिकम अनकंट्रोलेबल। अच्छा, लेटर जो है इस कॉलेज में पूछा गया है किसके बारे में, पावर ब्रेकडाउन के बारे में बोला गया है, और इसमें रेफरेंस देना है एग्जामिनेशन का। स्टोरी में जो है वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में आपके पास इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन आवर लाइफ है, नॉलेज इज पावर है, और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, ट्रांसलेशन में देख लें, ट्रांसलेशन में हमारे पास कौन कौन से जुमले हैं। ट्रांसलेशन में हमारे पास जो जुमले हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसकी ट्रांसलेशन लिखवा भी देंगे जो अभी मैंने यहाँ से कट कर दी है। खुदगर्ज की कोई इज्जत नहीं होती, देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फिश मैन, और अ सेल्फिश मैन हैज नो रिस्पेक्ट भी हो जाएगा। गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका था, ये हो जाएगा द वर्क हैड फिनिश्ड बिफोर समर वेकेशंस बिगेन। क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, डिड ही एग्री टू योर ओपिनियन। अगर वो डॉक्टर ना होती तो वो अली का इलाज ना करती, इफ शी वर नॉट अ डॉक्टर शी वुड नॉट ट्रीट अली। क्या वो पाबंदी से वर्जिश करता है, डज ही एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप इसको डू या टेक से बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा, डज ही टेक एक्सरसाइजेस रेगुलरली या डज ही डू एक्सरसाइजेस रेगुलरली, दोनों करेक्ट हैं। आदमी अपनी सुबह से पहचाना जाता है और हर चमकती चीज सुना नहीं होती, दोनों प्रोवर्ब्स हैं। याद रखिएगा आपकी ट्रांसलेशन में प्रोवर्ब्स भी आते हैं। अगर आपने प्रोवर्ब्स की लिस्ट सुननी है जो कॉमन प्रोवर्ब्स हैं, जो कि डेफिनेटली उनमें से ही आपके पेपर में आएंगे प्रोवर्ब्स, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन आ रहा है आप उससे क्लिक करके वहां से आप प्रोवर्ब्स की लिस्ट देख सकते हैं। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज द राइट आंसर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अच्छा, यहाँ पे शी वुड नॉट ट्रीट अली था, अली होगा, ये मैंने गलत कर दिया, इसको सही कर देता हूँ। वो अली का इलाज ना करती, शी वुड नॉट ट्रीट अली। ठीक है जी, तो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अब अगली वीडियो आएगी तो गालिबन उसके अंदर हम बहरिया कॉलेज कारसाज के ही जो इवनिंग शिफ्ट है उसके पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।